Hello बच्चों, as we are in continuation of the general characteristic feature of kingdom fungi, तो जितना भी हम लोगों ने अभी उसके वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक फीचर पर डिस्कशन किया है, तो इन लास्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है पार्ट ऑफ दिस kingdom of fungi, in which we just highlight on the how the reproduction in fungi takes place is there. So as you know, the reproduction, what does it mean? Reproduction, whether in animals or it is plants, it is a process by which the individual organism reproduces themselves to produce द प्रोजनी लाइक देमसेल्व्स. तो इसमें जो रिप्रोडक्शन जो है इन केस ऑफ फंजाई में, बिकॉज इट इज ए वास्ट वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू दिस किंगडम, सो देयर आर ए 3 टाइप ऑफ methods in which the reproduction is carried out by the fungi. So these reproduction you may categorize in the following headings. One is vegetative reproduction, then other is sexual reproduction, and the other is asexual reproduction. So here just if we want the highlight on the vegetative type of the reproduction. Vegetative type of reproduction in which the man plant's body, that is bifurcated, divided into the following manners, and the portion which is broken away from the parent cell that become a new individual. In such a way, the vegetative reproduction that is carried out in the fungi as follows. The first is that is fragmentation. This type of reproduction is taking place by which the main plant's body, in which any fragment broken away from the parental body, and that fragments is able to produce the young ones, and that is very much prevalent in the case of rhizopus and mucor. तो इसमें पेरेंट्स की बॉडी जो है कोई भी फ्रेगमेंट जो है इसमें जो है ब्रेक डाउन हो जाता है और वो फेवरेबल कंडीशन में वो दो इक्वल में डिवाइड होकर के और वो जो है नई प्लांट बॉडी बना देता है. तो इस टाइप के हम रिप्रोडक्शन को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. दूसरा जो है बाय फिजन. फिजन इट इज रिप्रेजेंटेड मींस फिजन मींस डिवीजन. Fission, whether it is binary fission or multiple fission is there. So this is fission, that is by which the parental body divided mitotically and transform into two daughter form. So that is taking place in a particular type of organism which is unicellular, and it is Saccharomyces cerevisiae. It is commonly known as yeast. ईस्ट 2 टाइप का रिप्रोडक्शन करता है वेजिटेटिव में. एक तो करता है बाय फिजन, 20 फ्रेगमेंट जो है सेल जो है ब्रेक डाउन हो गई और वो इक्वल 2 में डिवाइड हो गई. और दूसरा है बाय बडिंग. बडिंग के केसेस में क्या है कि वेयर देयर इज ए प्लांट बॉडी इज देयर, और इस प्लांट बॉडी के फॉर्म में अगर कोई दूसरे टाइप की प्लांट सम स्ट्रक्चर अपीयर इज देयर, दिस इज बर्ड. ये बर्ड है और ये पेरेंट बॉडी है. दिस पेरेंटल बॉडी डेवलप ए स्मॉल बर्ड. लेटर ऑन दिस बर्ड जो है दैट इज सेपरेटेड एंड टू बिकम इंडिपेंडेंट, and this is type of reproduction that is called budding there. And it is budding and fission, it is represented by yeast, which is scientifically known as Saccharomyces cerevisiae. Then it is oidea. Oidea a representative, इसमें की some part a structure that is appears and that is carried out by a fungus. It is represented by Caprinus, then followed by
clamidospores. This clamidospores, though it is also a vegetative form, which is able to form, that is the new individual, and it is prevalent in स्मट्स. स्मट्स के केसेस में ये पैरासिटिक फंगस जो है, इसमें जो है बाई क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन जो है, these are the different type of vegetative reproduction, that is by fragmentation, fission, oidia, budding, then clamidospores. Second type of the reproduction in fungi is, that is asexual. Asexual, where there this body is not distinguished into distinguished, but it is able to produce some, that is type of spore-like structure, that is uh, going through following types. Number one is, that is zoospores. Zoo means any, they are the motile, no doubt spores are there, and it is represented by pythium. Second type of, that is by a planospore, where there is a around there a hard जो है, the layer is developed is there, wherever the favorable condition जो है comes out, then that is, it develops into a new individuals, and it is represented by rhizopus, and that is the mucor. Then it is most important, that is in conidia formation. Conidia formation जो है, this is represented by penicillium, aspergillus, and that is the pythium. ये three species जो है फंगस की, which are very much important because they form the conidia, develop on the conidiophore. So where that is the reduction division is takes place, and later on this thallus structure appeared after germinating of this conidium is there, conidiospore. Then it is third type of sexual reproduction, which is also very much present in higher form of the fungi. So these sexual reproduction, that is passing through three very important phases. That is, one is plasmogamy, other is karyogamy, and other is meiosis. In this case, what happens is that plasmogamy, suppose two cells are there. These two cells are there, where they have the distinct nucleus, and when that is they come together, these the cells that come together, and it is the, this is the protoplasm that is getting entangled. Protoplasm जो है intermingle, mixing of protoplasm. So whenever that is the, first of all, it is the protoplasm of two distinct thallus, they come in contact, and the membrane or the cell wall which is disappeared in such a way, when the, first of all, it is the protoplasm which are getting mixing, such type of reproduction is, this is known as plasmogamy. And in this case, the hyphae which developed in due course of time, where that is the protoplasm is intermingled, but their nucleus remain distinct. This phase of, that is the nucleus, that is called dikaryotic phase is there. Di means two, karyot means chromosome, or that is the nucleus, they are distinct in the same cell, that is called dikaryon nucleus, and the phase is known as dikaryotic phase. थर्ड, सेकेंड टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन जो है, जिसमें कि जस्ट अपोजिट टू दिस वन इज देयर हियर, दैट इज द कैरियोगैमी, ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज, तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन जो है न्यूक्लियस का, दैट इज यूनिफिकेशन हो रहा है. इसमें सबसे पहले व्हेन एवर टू कंपिटेंट हाइफी दे कम टुगेदर इज देयर, जिसमें कि न्यूक्लियस जो है सबसे पहले जो है वो क्या करता है, intermingled होता है, later on it is the protoplasm. So this is known as karyogamy. Karyogamy is a process by which the material or the nucleus getting mixed
फॉलोड बाई दैट इज द प्लाज्मोगैमी। तो कुछ कुछ सेल्स जिसमें लोअर फंजाई में सबसे पहले जो है इसमें न्यूक्लियस जो है वो पहले फ्यूज होता है, उसके बाद जो है वो प्रोटोप्लास्ट जो है वो फ्यूजन होता है, इसको हम कहेंगे दैट इज कैरियोगेमी। इसमें इसके बाद वट एवर दैट इज द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो जो स्ट्रक्चर जो है जो डेवलप होती है, इफ, तो यहां पर हम दो टर्म यूज करते हैं, वन इज होमोथैलिज्म एंड अदर इज हेटेरोथैलिज्म। होमोथैलिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, the different hyphae of the same mycelium that is occurring in higher fungi, whatever that is there, in this case what happens कि इस homothallis means different thalli of the same mycelium, such type of thallus hyphae is known as homothallism, and on the other hand just opposite to homothallism it is heterothallism। इसमें डिफरेंट माइसीलिया जो है, दे डिफरेंट माइसीलिया हैविंग द सेम, डिफरेंट माइसीलिया डेवलप द सेम जो है थैलस स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहेंगे हेटेरोथैलिज्म। इस टाइप से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की तरह से ये जो है बिहेव करते हैं। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसको 3 स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, वन इज oospores एंड अदर इज ascospores एंड अदर इज basidiospore। oospores का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि ये दैट इज स्ट्रक्चर जो है पक्सीनिया में डेवलप होता है, और न्यूरोस्पोरा कॉमनली नोन एज पिंक वर्म बोलते हैं इसको, और दैट इज मशरूम, न्यूरोस पिंक मोल्ड, पक्सीनिया, न्यूरोस्पोरा एंड मशरूम। इन तीनों में जिनको कि हायर फंजाई जो है इसमें डिलेड कैरियोगेमी होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो है प्लाज्मोगेमी जो है वो पहले हो जाती है, और लेटर ऑन दैट इज द कैरियोगेमी टेक्स प्लेस इज देयर। एंड यहाँ पर जो है स्पोर्स जो है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें, और बेसिडियोस्पोर्स में ये क्लब से स्ट्रक्चर जो है ना वो डेवलप होती है। यहाँ पर अगर कंपिटेंट हाइफी जो है जिसमें वन इंडिकेटर्स दैट इज द मेल प्लस वन माइनस दैट इज द फीमेल इज देयर, इस कंडीशन में आकर के ये जो है अगर ये हैप्लॉइड थैलस है, यहाँ पर आकर के ये एक जाइगोट बना लेते हैं, जिस दैट इज ये हो गया आपका वन इज हैप्लॉइड, दिस इज हैप्लॉइड, और इसमें जो है 2m जो है वो डिप्लॉइड बनता है। इस डिप्लॉइड के बाद इसमें जो है रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। दिस इज हैप्लॉइड स्पोर्स इन फ्रूटिंग बॉडीज में आकर के ये डेवलप हो जाते हैं। इस टाइप से जो है ये 3 बेसिस पर जो इनके सेक्स गैमेट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, वो दे आर कैटेगराइज oospores, ascospores एंड basidiospores। अब इसमें जो गैमेट्स जो है गैमेटिक फ्यूजन जो है, जो हाइफी है विच रिप्रोड्यूस दैट इज गैमेट्स, ये गैमेट्स की कंडीशन क्या हो सकती है? अगर बोथ द हैप्पी इफ दे डेवलप सेम टाइप ऑफ दैट इज द गैमेट, तो दे आर कॉल्ड आइसोगैमी। आइसोगैमी, आइसो सेल्स, आइसो का मीन सिमिलर, अगर दोनों ही मेल एंड फीमेल गैमेट प्लस और माइनस इफ दे आर अलाइक, मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चरली जो है वो सब एक जैसे हैं, उनके फ्यूजन को हम कहते हैं आइसोगैमी। और अगर एक मोटाई एक बड़ा है एक छोटा है, देयर इज सम डिफरेंस इज देयर, तो उनको हम कहेंगे एन आइसोगैमी। और ऊगैमी में इसमें जो फीमेल मन जो है संभाट ये बिगर होती है, लार्जर होती है, देन दैट इज द मेल वन इज देयर। तो सच टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन जो है दैट इज कॉल्ड ऊगैमी इज देयर। थर्ड तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, फर्स्ट दिस इज गैमेटिक फ्यूजन, इसमें आइसोगैमी एंड आइसोगैमी और ऊगैमी। उसके बाद गैमीटेंजियल कांटेक्ट, इस गैमीटेंजियल कांटेक्ट में उसमें भी मेल एंड फीमेल जो है लाइक कम टुगेदर इज देयर, और इस तरीके से दे ट्रांसफर देयर गैमेटिक मटेरियल फ्रॉम प्लस टू -1 एंड गैमेटो दैट इज गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। गैमीटेंजियल कॉपुलेशन में इसमें जो मेल जो है जो डोनर होता है
उसमें ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है और फीमेल में जो है वो ट्रांसफर करता है. दिस इज कॉल्ड गैमीटेंजियल copulation. Then spermatization, this is somewhat motile one is there which interact with the female one is there. Then somatogamy, likewise the way the protoplasm, that is first, that is fusion takes place, in which whatever the fruiting bodies that is appeared, where that is the reduction or meiosis division is takes place, by which haploid hyphae is developed. So this is the different type of the reproductive system which are very much prevalent in kingdom fungi is there. Now that is the different categorize, the classification of the fungi will be discussed in due course of time in my next lecture. Thank you.